हेलो एंड वेलकम टू थोड़ा और मैजिक। मैं हूं अमृता रायचंद और ये चल रही है हमारी टिफिन सीरीज। अब 2-2.5 सालों के बाद जब अगस्त्या वापस स्कूल जा रहा है तो ट्रस्ट मी मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है टिफिन की। एंड अगस्त्या इज नॉट एन इजी बॉय टू प्लीज, बट वन डिश ऑफ माइन दैट ही एब्सोल्युटली लव्स इज दिस रशियन सैलेड सैंडविच व्हिच आई एम गोइंग टू मेक टुडे। सो लेट्स बिगिन। सो रशियन सैलेड सैंडविच बनाने के लिए पहले रशियन सैलेड ड्रेसिंग बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी, प्यारी और इजी ड्रेसिंग है एंड इन फैक्ट ये ओरिजिनेट रशिया में हुआ था एंड दैट्स व्हाई द नेम। लिटिल बिट ऑफ टैंगी, लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी व्हिच कम्स फ्रॉम द मस्टर्ड। वैसे तो टेक्निकली इसमें हॉर्स रैडिश यूज होता है जिसे हम वसाबी के भी नाम से जानते हैं, बट मस्टर्ड डज द जॉब। तो हल्का सा मस्टर्ड इसमें डालेंगे, हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर। Mayo has salt, so you don't really need a dash of pepper. इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर हम डालें, which is dill मिलता है सुआ, दिल हमारा दिल नहीं, जो अब होता है वो अगर आप इसमें डाल दें तो इसका जो फ्लेवर है वो रियली एलिवेट हो जाता है। तो आई वुड इंसिस्ट कि आप डालें, पर ना डालें तो चलेगा। Just gonna finely chop it. जो प्यारी खुशबू आ रही है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट यू। ओके, अब इसमें पड़ेंगे खूब सारे वेजिटेबल्स। ऑल दीज वेजिटेबल्स हैव टू बी पार बॉइल्ड। आई हैव सम कैरेट, उसे भी मैंने पार बॉइल करके रखा है एंड आई एम गोइंग टू फाइनली डाइस इट। Now, apart from all the veggies, I also have some pineapple to add that little sweetness to our sandwich. Alright, this is done. अब बस सारे जो हमने vegetables और pineapple काटे हैं, all of this will go into our bowl with the dressing. Here are some beans जो मैंने पहले से ही काट के रखे थे. Added some nice boiled peas now. Now just mix. Oh, look at this, how beautiful this looks. That's it, filling is ready and now all we have to do is finish up our sandwiches. So I have some whole grain bread here जिसे मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी. So again a tip, बटर को सुबह सुबह जब आप उठें तो निकाल के बाहर रख लें ताकि it becomes nice and soft and spreadable. There you go, it's much easier to spread now. ठंडा ठंडा अगर आप फ्रिज से निकालेंगे तो फिर कहीं ज़्यादा लगेगा कहीं कम and मज़ा नहीं आएगा. Alright, now I'm going to line the slice of bread with some lettuce ताकि जब हम अपना ये जो filling है डालें हमारा bread soggy ना हो after a few hours, which is when children have their tiffin. Now the same thing on the other one. Just spread it nicely. And जब आप इन्हें पार बॉयल करके रखेंगे, it's going to be easy to eat and they taste absolutely beautiful when they get mixed with this mayo dressing. Now we just have to cover it with another buttered slice of bread like this. Now let's just cut this from the center. Love the crunchy sound. Look at this. ना यमी है कि एक तो मैं अपने लिए रखूंगी और बाकी पैक कर लूंगी. What's not to love in this? Let's pack this. It's healthy, it's wholesome and it's yummy. And there you go. और ये मेरे कैमरा के शॉट के लिए. Russian salad sandwich बनाइए अपने बच्चों के टिफिन में and when they tell you it's absolutely delicious, don't forget to like and share this video with the rest of your family and friends. Of course, don't forget to subscribe to Amrita Raijat Chef and Beyond so that you can keep watching such exciting recipes. तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे with another wholesome, yummy and delicious recipe. Till then, this is Amrita Raijat saying bye bye.